Hello, everyone. Hello, hello. Yes, yes, I'm okay. A very good evening to one and all, and welcome to this session on wherein I'll be talking about CAT 2022. I think this is what is something which is going on, or सब लोग इसी के ऊपर discussion कर रहे हैं, and I thought I'll just make a session on this when we talk about CAT 2022. Now, the first thing when we talk about CAT 2022 and all the predictions which is coming on that most likely it would be IIM Bangalore, right? Those that will be setting the paper for if I talk about CAT 2022. So likely to be conducted by IIM Bangalore, right? So whatever I'm going to talk about is very likely based on the predictions, and जो भी मैं बातें कर रहा हूँ तो ये सिर्फ एक predictions है. So don't take it as कि हाँ बस एकदम विश्वास कर लिया जाए. So क्या हो सकता है? So आज इस वीडियो के अंदर I'll be talking about कि if let's say IIM Bangalore is setting up the paper and I'll compare it with in earlier times. I mean when IIM Bangalore ने पहले जब पेपर सेट किया है, so what was that paper all about, right? When we talk about type of questions or the number of or the kind of questions, I'll not talk about numbers as such, right? Because मुझे ऐसा लगता है कि अभी as of now numbers की बात करने के लिए कोई मतलब नहीं है. और anyways, if you go to make my test platform of Ekoching, वहां पर आपको अपने हिसाब से मतलब if you want to go for let's say a 66 number of questions, right, as far as mock test is concerned, or you want to go for a 76 number of questions in mock test, or you want to go for 100 question in mock test within 66, if you want to keep 22, 22, 22 in all the three sections together, or let's say in 76 instead of 76 you want to go for 25 and you want to keep 25, 25, 25. So at this point of time मेरे ख्याल से that is not the major challenge, especially with the make my test platform, because वहां पर you have all these things in place wherein you can pick and place the number of questions or accordingly आप इस हिसाब से mock दे सकते हैं. That is something which is given apart from the static test which will start from July. So मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ about CAT 2022 which is likely to be conducted by Bangalore, और उसने बैंगलोर ने पहले IIM बैंगलोर ने पहले क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके से पैटर्न्स क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है वो चीजें मैं कंपेयर करूंगा, एंड बेस्ड ऑन दैट विल डिस्कस in the next few minutes. So इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए and please share this with as many CAT aspirants as you can so that everyone can get benefit out of it, and please subscribe to this channel so that you can keep on getting the notifications related to examination. And we will be coming up with the sessions on SAT, IFT, will talk about new IIMs, we'll talk about packages, we'll talk study planner. I'll also be coming up with 200 study planner for CAT 2022. So all these things I'll be coming up in few days to come, right? So if I talk about IIM Bangalore ने 2007 के अंदर और 2016 के अंदर दो बार जो है पेपर सेट किया है, राइट? अभी पहले भी किया होगा, बट मैं सिर्फ अभी यहाँ ले रहा हूँ कि लास्ट डेकेड के अंदर, so 2007 and 2016 यहाँ पर IIM Bangalore जो है वो पेपर सेट किया है. So let's talk about overall, if I compare it both with 2007 and 2016, overall verbal is comparatively easier. Yes, so कई बार हमें लगता है कि नहीं IIM Bangalore ने पेपर सेट किया है तो वो verbal fee होगा and all those things. So verbal is comparatively easier. And parajumbles here is, and the reason is students are very much worried, sir RC हो जाएगा, सर हम लोग पैरा समरी कर लेंगे, हम लोग शायद वर्बोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट पैराजम्बल इज समथिंग बहुत डर लगता है साहब, बिकॉज उसके रीजंस भी काफी हैं. बिकॉज मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि हम लोग उससे डर जाते हैं. वी हैव काइंड ऑफ have made the mental blockage कि ये होगा ही नहीं मेरे से, राइट? और tricky है, I'm not denying the fact, because options are not there, but at the end of the day, I mean, if you are a CAT aspirant, you are aspiring for the top B schools of the country, you need to set all rolling और आपको पैरा जंबल्स करने पड़ेंगे. I'll talk about this in the later videos to come. So overall verbal was easy. पैरा जंबल्स जब IIM Bangalore ने पेपर सेट किया were an exception because they are slightly trickier and I would say difficult. DILR deceptive. Yes, both in 2017 and 16 आप कहीं पर भी जाइएगा एनालिसिस देखिएगा, they were deceptive with difficult questions, right? So point is DILR करने के लिए तब भी जो मैं हमेशा बोलता हूं, I mean 50% of the marks I think more than sufficient to get your 99.9 percentile. So it was deceptive. Look very tough, right? Very deceptive.
ऐसा लग रहा था बहुत ही ज्यादा, मतलब अच्छा दोनों नॉट दैट मच टफ, आई वोंट से इजी बट मॉडरेट लेवल, और कई बार पैसेज ऐसे लग रहा था वो ये पैसेज ये तो मैं 1 मिनट के अंदर कर लूंगा, बट आई मीन देयर वर डिफिकल्ट क्वेश्चंस देयर, सो बोथ द काइंड ऑफ things were there as far as 7 and 16 is concerned. Quantitative ability was difficult, yes, the quantitative ability section was difficult, so which means आपको अब एक चीज सोचना पड़ेगा कि अगर आप 2022 के अंदर अगर मान लो, आई मीन द थिंग्स विल येट टू कम, आई मीन कौन अनाउंस करेगा, द कैट नोटिफिकेशन इज येट टू कम, कितने क्वेश्चंस होगा, सैंपल पेपर रिलीज है कैट, आई मीन बिफोर बिफोर आई मीन नोटिफिकेशन बिफोर कुछ चीजें पता लग जाएंगी, राइट, एंड जब आपको नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तब हम और डिटेल के अंदर इसके अंदर बात करेंगे, बट आप ये समझ के रखिएगा प्राइमा फेसी कि अगर आई एम बैंगलोर पेपर सेट करता है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हार्ड आ सकता है, a bit tough. Verbal ability, reading comprehension, I mean specifically, I mean that's what I can see will be on easier side, right? So verbal ability and reading comprehension 7 16, I mean ये सारी चीजें बातें हम कर रहे हैं, so 5 passages typically, pattern लगभग सेम ही था, so there were 5 passages and again 3 and 2, right, 3 passages with 600 words with 6 questions each, and 2 passages with 300 words with 3 questions each. So typically if you talk about, here we are talking about 3600 words, right? It was a 1 hour paper, so don't assume that 40 minutes के अंदर हम क्या करेंगे, right? अभी हम लोग 40 मिनट के पेपर की बात करते हैं, and then there were 2 passages with 300 words each. Again we are talking about a 600 words paper. So overall if you see we are talking about roughly what, I mean let's keep the calculation very easy. चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 4400 words की. Sir, why you are talking about words, why you are calculating these words? I'll talk about this, just give me some time. So 4400 words as far as passages are concerned. Then if I talk about para summary, 150 words typically into 3, I'm talking about 450 words here, right? And overall agar aap baat karenge questions ki, we are talking about what, 34 questions. 34 questions into, I'm talking about roughly roughly क्या 34 questions into 4 options, and 4 options के बाद हर एक लाइन के अंदर I would say typically 15 words, right? थोड़ा सा मैं easy calculation करूंगा, I mean I'll make it very easy. So I'm talking about 15 fours are what, 60 into let's say 35 if I'm talking about, right? मैं सिर्फ यहाँ पर 35 typically मैं बोल रहा हूँ, let's say 1800 odd words here, right? 1800 odd words here. So I'm talking about 4000, 5000, 5800, 6266. So typically I'm talking about 6800 words. Typically I'm talking about 6800 words, and that too in 60 minutes. That too in 60 minutes. So students कई बार बोलते हैं कि सर इस हिसाब से तो ठीक है, हम लोग 100-120 की स्पीड से काम करेंगे, चल जाएगा. But guys understand, आप पैसेज को एक बार पढ़ते हैं, या आप क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, या फिर आप ऑप्शंस को सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, ऐसा आप नहीं करते, राइट? सो यू नीड दैट स्पीड ऑफ 220 प्लस, राइट? वेदर इट इज अ 40 मिनट्स पेपर or it is a 1 hour paper, because if I talk about 40 minutes paper, लगभग आपको 4000 words देखने को मिलेंगे if I put together all the options, all the passages together, right? So this is something which you need to understand, ठीक है? As far as concerned, तो यहाँ पर अगर हम लोग I am Bangalore जब पेपर सेट कर रहा है, so डाल दो. Para jumbles, yes, as I said, difficult. Para summary, I would definitely say वो easy, right? बिल्कुल easy para summary था, and then odd sentence para jumbles comparatively I would say easy to moderate category. So 27 to 28 attempts out of 34. 27 to 28 attempts out of 34 with 90% accuracy. You should get 99 percentile plus. That was a paper which was set by IIM Bangalore, right, in earlier years, right? That is verbal ability and reading comprehension for you guys. Again, यहाँ पर हम दो चीजें बोल रहे हैं. एक, reading speed पे हमारे को ध्यान करना पड़ेगा, because मैं सब students को बोलता हूँ, please focus on reading, because until and unless you won't get 220 plus, right, I mean it will be very difficult, all right, as far as attempting the paper, right? Second is logical reasoning and data interpretation. So I mean there's no real change, because if I talk about let's say 2016 paper, or let's say if I talk about 2022 paper, 2021 paper as well, right? So in दोनों पेपर को भी अगर आप कंपेयर करेंगे, so यहाँ पर again there were 20 questions, so 10 questions in LR and 10 questions in DI. यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 16 questions LR, 16 questions DI, because what I believe is if you see the questions, right, if you see
I mean, the weightage of questions, whether it is mathematics, whether it is LRDA section, or whether it is verbal ability, reading comprehension, they have not changed much, right? हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कुछ सरप्राइज फैक्टर होगा या कुछ और चीज आ सकती है. सरप्राइज फैक्टर तो हमेशा आएगा. I mean, अगर आ भी गया, so it is surprise for all students across the country. राइट. सो अगर सरप्राइज है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट मोर और लेस यहाँ पर सरप्राइजेस कुछ देखने को मिल नहीं रहे फ्रॉम पास्ट सो मेनी इयर्स, वेदर इट वाज अ 60 मिनट्स पेपर और अ 40 मिनट्स पेपर, राइट. सो आउट ऑफ दोस 8 सेट्स, अगेन व्हिच इज अ स्टोरी एवरी ईयर, कंसीडरिंग वी आर टॉकिंग अबाउट अ 32 क्वेश्चंस पेपर, सो टोटल 5 सेट वाज समथिंग व्हिच वाज डूएबल, राइट. सो ये 5 सेट इतनी कॉन्फिडेंस से लिखना डूएबल, ये सिर्फ आई एम बैंगलोर के केस के अंदर हो सकता है, कोलकाता के केस के अंदर नहीं, अहमदाबाद के केस के अंदर नहीं, वहां थोड़ा डिफिकल्ट होता है. एंड पिकिंग द राइट सेट वाज की, एज आई सेड, DILR वाज डिसेप्टिव. आपको राइट सेट, बिकॉज many times I've seen students going into the passage, going into the particular particular set, and then after 10 minutes, I mean, you're gone, right? So you need to understand picking the right set was the key. As far as when I'm Bangalore was setting up the paper, a raw score here of around 48, you should get 99 percentile. A raw score of 48, you should get 99 percentile, which means, I mean, again, if I talk about 4 sets, जो हम हमेशा बात करते हैं कि 50% of the paper LRD है, और ये चीज चेंज नहीं हो रही है. कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं, because I'll do one session also, the percentile over the years, राइट. ये परसेंटाइल ओवर इयर्स के अंदर चेंज हुई है, आई मीन एज कंपेयर टू मार्क्स, राइट. सो कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल हुआ है. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप जब हम उस वीडियो के अंदर जाएंगे, इफ यू सी द परसेंटेज मोर और लेस द सेम, more or less the same, वो percentage and percentile, I'll compare that also, it is more or less the same, you don't have to worry, ठीक है. So हम लोग again verbal ability, reading comprehension, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यही आपका I mean you guys give a very step brotherly treatment to verbal ability, because generally a non-mathematics student will focus on mathematics because that's something which is area of concern. For mathematics students, that is something which he loves to do. So यहाँ पर इसको थोड़ा सा step brotherly treatment मिलता है, but this is something which you need to understand that आपका overall percentile increase करने के लिए सबसे ज्यादा helpful जो होगा वो होगा verbal ability and reading comprehension. So in the third section when we are talking about is quantitative aptitude. Now this is what the breakup which I've done. So number system, 3 to 4 questions on number system, right? Again, सबसे बड़ा unit as far as quantitative aptitude is concerned कि number system करते करते सर जान निकल गई, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, right? Algebra 8 to 9 questions. Yes, algebra dominated paper. I am Bangalore, and arithmetic as well. So if you see, I mean, both put together 20 questions out of 34, we are talking about algebra and arithmetic, right? 20 out of 34, right? Students बहुत ज़्यादा concern है geometry I mean higher mathematics कर रहे हैं, modern mathematics पे जा रहे हैं, logs की बात कर रहे हैं, modulus की बात कर रहे हैं, coordinate geometry के ऊपर जा रहे हैं. Guys, एक बार functions देख रहे हैं, पहले ये देख लो, right? और उसको देख देख के डर भी रहे हैं. I mean, the beauty of this is, I mean, we are also worried कि यार क्या हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, right? So you don't need to be worried on all these things and just focus कि आपको ये सारी चीजें जो है आराम से मतलब देखनी है कि मेरा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा. दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. मेरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मुझे अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो वो कीजिए, राइट. देन इफ आई टॉक अबाउट मॉडर्न मैथमेटिक्स, 3 questions, only 3 questions, right? Geometry 7 to 8 questions, right? So geometry again is the third, I would say, third module or third unit which you guys need to focus upon, right? So I would say arithmetic, algebra and geometry, these are the 3 major areas जो आपको ध्यान रखना चाहिए, because यहीं से आपके major questions जो है देखने को मिलेंगे. और ये आई एम बैंगलोर ने जब पेपर सेट किया है तब भी यही था, अगर आई एम अहमदाबाद भी पेपर सेट कर रहा है तब भी लगभग यही है, आई एम कोलकाता पेपर सेटर कर रहा है. हाँ ठीक है, मैथ्स डिफिकल्ट हो जाता है जब आई एम कोलकाता पेपर सेट कर रहा है. स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो मतलब यू शुड बी रेडी विद इट कि आई मीन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज अ सेक्शन विल इज देयर टू स्क्रू योर हैप्पीनेस व्हेन आई एम कोलकाता इज सेटिंग द पेपर, राइट. सो अलजेब्रा 8 to 9 questions, arithmetic 10 to 11, so 20 out of 34, right? That's a very big number, guys, जो कि सिर्फ और सिर्फ लगभग I would say 65% of the paper is these 2 units, algebra and arithmetic. और अगर इसके अंदर ज्योमेट्री डाल दो, so we are talking about
28 out of 34. So arithmetic, guys, जो लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है. जो कैट 20 के लिए स्टार्ट किए हैं 3 यूनिट, एंड दीज 3 यूनिट्स विल व्हाट इट विल टेक, एटलीस्ट कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं प्रैक्टिस को अभी साइड में रख रहा हूं. व्हाट इट विल टेक, अगर आपने स्टार्ट नहीं भी किया है ये 3 यूनिट करने के लिए, आई एम सेइंग व्हाट 30 to 40 days is something which you can take to complete these 3 units with a decent practice. Decent, I'm not saying much, decent practice कि एक बार मुझे समझ में आ जाएगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या है, टाइम एंड वर्क क्या है, मुझे ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. तो एटलीस्ट ये 30 से 40 दिन के अंदर तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से हो सकता है, राइट. सो आप समझिए कि आपके पास पूरा पेपर जो है 3 यूनिट के ऊपर है. अगेन 20 to 25 अटेम्प्ट, इट वाज अ इजियर सेक्शन, राइट. सो मैंने वर्बल इजी बोला है, मैंने क्वांट्स इजियर सेक्शन बोला है, वर्बल के अंदर पैराजम्बल्स मैंने डिफिकल्ट बोले हैं, डीआईएलआर के अंदर क्वेश्चंस और डिफिकल्ट, राइट. सो अटेम्प्ट्स विद 90% एक्यूरेसी, 22 to 25 अटेम्प्ट्स विद 90% एक्यूरेसी, यू शुड बी एबल टू गेट 99 परसेंटाइल. सो दिस इज समथिंग इज अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट. सो हमने वर्बल एबिलिटी की बात करी, एलआरडीआई की बात करी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करी. सो कैट 2022 जो मैं समझ रहा हूं इस पर्टिकुलर पेपर्स, इस पर्टिकुलर पास्ट ईयर पेपर से, और बेस्ड ऑन 2016 में क्या हुआ, 2022 में 2016 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ, उससे पहले जब पेपर सेट हुआ था तो क्या हुआ, और 2022 में क्या हो सकता है. सो इट शुड नॉट बी मच ऑफ अ सरप्राइज. दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, right. So that's what I am expecting, right. So with finger crossed, so मैं और ये नहीं बोला कि ऐसा ही आएगा, right. So that's what I am expecting, should not be of much of a surprise, which is the case when IMA sets the paper, right. Though IMA last time, I mean, there was again not of a surprise apart from reducing the time, and that is again due to COVID, nothing else. LRDA section would be decider for clearing the cutoff for sure, as it is the case every time. LRDI decider होगा अगर वो संभाल लिया, because देखिए जब आपका सेक्शन इजी होता है, when you are saying quants is easy, when I am saying verbal ability and reading comprehension is easy, इस टाइम पे जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी हुई होती है उनके बहुत नाइंसाफी होती है. That's not good. Sections are easy, and if the students have prepared really well, because cutoffs will go up, right. Cutoffs will go up. So इसीलिए जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर पेपर इजी आ गया तो फिर आपका ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, तब डिसाइडिंग फैक्टर होगा एलआरडीआई, जो हमारे को समझ में आ रहा है कि बैंगलोर जो पेपर सेट करेगा, सो दिस सेक्शन माइट लुक डिफिकल्ट. सो प्लीज 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 एलआरडीआई पे थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट करें, बट दैट डजंट मीन कि आप क्वांट्स और वीआरसी करना छोड़ दें. Again, one more thing which I'm just mentioning here, quantitative ability section should be more of a logic rather than calculative, right. So I personally don't think, which was the case last year, that quants was very much calculation intensive, right. So I don't think कि इतना ज़्यादा intensive calculation होगा. It will be more of a logic. अगर आपका logic अच्छा है, probably you will be able to score well as far as quantitative ability section is concerned. The verbal ability section will be easy to moderate, right. That's what I'm expecting, because parajumbles यहाँ पर specifically, and I would say at least one passage here and there यहाँ पर थोड़ा सा challenge आ सकता है. Otherwise, I mean, you might sail through. अगर 2007 और 2016 जैसा पेपर आता है और अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया है तो. Now I was about to stop here, but then someone said कि सर quants को थोड़ा और describe अगर आप कर सकते हो, and what else we can take care of. So I'll talk about that as well. Just hang on for some time, and please सेशन को एंड तक बने रहिएगा. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशंस हम लोग हमारे YouTube चैनल के थ्रू काफी कुछ बता देंगे. So things to take care of. What all things I should take care of, right? So पहली चीज, keep up with practicing reading comprehension. आप प्लीज अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस को मत छोड़िए, and ensure that you are reading on daily basis, right. Please इस बात का ध्यान रखिए. When I am talking about reading comprehension, अगर आपको लग रहा है मेरे passages के I mean, I don't have much passages to solve, or I don't have much parajumbles to solve, please go to www.makemytest.com. Yes, I repeat,
प्लीज गो टू www.makemytest.com, और वो आपको शायद डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा, आप जाइएगा ई कोचिंग की वेबसाइट पे। प्लीज गो टू ई कोचिंग वेबसाइट, मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूं, दोज हु आर जॉइनिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जस्ट गो टू www.ecoaching.com, और ecoaching.com पे आपको राइट हैंड साइड में पर्पल कलर से दिखेगा मेक माई टेस्ट, राइट। सो मेक माई टेस्ट में जाके आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। इफ यू आर हियर, जस्ट आई जस्ट सी इफ आई कैन शेयर इट विद यू एज वेल, कि कहां पर जाके और क्या करना है, बिकॉज ये आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच ऑल ऑफ यू शुड sorry for this, yeah, so let's go for make my test. So आपको यहाँ पर अभी एक विंडो दिख रहा होगा। Now in this particular window, if you can see, आपको राइट साइड के अंदर on the top पर्पल कलर से दिख रहा है make my test. Can you guys see this? Yes, I hope you can. Please, yes. Okay, so यहाँ पर जाके आपको make my test पे क्लिक करना है, right? You just go and click on make my test. आप make my test पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरीके का कुछ विंडो ओपन हो जाएगा। नाउ इफ यू गो ऑन दिस पर्टिकुलर विंडो, इस विंडो के अंदर आपको यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में अगेन आपको साइन अप लॉग इन करना रहेगा। यू कैन जस्ट सिलेक्ट एन एग्जाम, यू जस्ट क्लिक ऑन टू MBA एज एन एग्जामिनेशन, select the course, you can select the course as CAT training, level of test, let's take moderate, type of test, let's take I would say what mock test के अंदर जाते हैं। So here we go, the default section based on our expert analysis for past year paper, so we will give you the default section is as well। so आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं कि आप अपना खुद का MMT बनाना चाहते हैं या फिर आप एक्सपर्ट्स के साथ जाएंगे। so let's say अगर मैं बोल रहा हूं मैं खुद का MMT बनाना चाहूंगा, so if I want to go to my own MMT, I can choose the number of questions। so let's say instead of 34 I'm getting into 34, right? so again यहां पर ये मेरे को बताएगा कि DILR के अंदर आपको क्या क्या चीजें पास्ट ईयर पेपर के अंदर देखी गई है। दैट्स द एक्सपर्ट एनालिसिस व्हिच दिस पॉपअप विल गिव, दैट दिस इज समथिंग व्हिच you need to understand। इसके अलावा अगर आप फिर भी खुद अपना बनाना चाहते हैं, that's your own wish, please do that। again when you move on to quants, again quants के अंदर भी ऐसे pop-up आएंगे, but still let's say if I'm taking 32 questions here, so 34 32 so I've taken let's say 98 का मैंने सेक्शन बनाया है, यहाँ पर मैं इसको 34 कर देता हूँ, right? so this is how, और अगर ये आपको टॉपिक वाइज आपको सेट करके देगा, and this is again based on the past year paper which is I mean past kind of questions जो कि CAT एग्जाम के अंदर आप इसको रीअपडेट करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, and here we go, you are all set to start the test, right? so please, I think this is a very beautiful this thing, and you can give n number of tests, unlimited number of tests, there is no restriction at all, my dear students। so please don't let this opportunity go। आपके पास टॉपिक टेस्ट है, सेक्शन टेस्ट है, सारी चीजें आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, right? so please keep practicing all these things, focus on, as I said, geometry, arithmetic, algebra, here we go, right? इसको कर डाला तो quantitative aptitude झिंगालाला। practice as many tricky sets as you can। LRDI, as I said, will be the decider। so जितना tricky sets आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, please do that। work on sets where language is bit tricky, focus more on logic rather than calculation, जैसा कि मैंने quantitative aptitude के अंदर बोला था। so इस सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, and as I said, this is just the prediction and presentation is based on the judgment of past year paper by Bangalore। so please do take care of all these things, right? so जो मैं बोल रहा था कि expected questions, if I talk about expected questions, this is what, again अगर आप देखोगे, so I mean थोड़ा मैं बोलूंगा इसको, मैं थोड़ा सा हायर साइड पे रखूंगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो इट शुड बी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री and then advanced mathematics, right? so this is something which I expect the paper has to be। arithmetic के questions कुछ इस तरीके से, right? so time, speed, distance, time and work, ratio and proportion। so ये past year paper है, right? 10 क्वेश्चन अगर अभी आ गए तो भैया बचेगा क्या? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही 24 है, आई मीन 22 है। so टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही 22 है, तुमने 50% अरिथमेटिक को दे दिया तो बचेगा क्या? this is what I mean the journey was so far, and based on that journey I'm giving you this particular data। so that is arithmetic so far। arithmetic के बाद this is what algebra is all about। so as I said, 10 here, right? 15 here, right? advanced mathematics, right? geometry। so ऐसी कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, ऐसी कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। so
right? So this is what this is what you can expect geometry, and then followed up by advanced mathematics, arithmetic. कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. So I said number, percentage, profit and loss, simple and combined interest, कुछ एक आधे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे. रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी मिक्सचर्स के ऊपर क्वेश्चंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क. ये 4 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी. सेम गोज फॉर अलजेब्रा एज वेल. सो अलजेब्रा के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. एडवांस्ड मैथमेटिक्स इज समथिंग, आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट, आई मीन द यूनिट्स फ्रॉम व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट एडवांस्ड मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, एंड द फॉलोड बाय ज्योमेट्री. अगेन ये ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. इन 4 चीजों में मेरे ख्याल से मेजर फोकस करना चाहिए, और ये 4 चीजों में मेजर फोकस कर लिया बिकॉज मैं इसलिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी लेके आया हूं. बहुत डर है स्टूडेंट्स को, राइट? अच्छा, एलआरडीआई के अंदर तो पता है नया सेट आना ही है. एलआरडीआई के अंदर तो पता है नया सेट आना ही है सर. उसमें तो हम आपसे कुछ प्रेडिक्शन ले नहीं सकते. आप एटलीस्ट क्वांट्स के अंदर बता दो, और वर्बल के अंदर ठीक है जो चल रहा है बढ़िया है. सो इसीलिए क्वांट्स के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल के आया था कि ये 4 चीजों पे आप ध्यान दे दीजिए, राइट? सो विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. Thank you for patiently listening to this particular session. I hope you must have liked the session. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज हिट द लाइक बटन, राइट? ताकि आपको और सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगती रहे. प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, राइट? एंड अगर आपको सेशन वगैरह अच्छा लगा है तो, और प्लीज राइट, आई मीन गिव योर कमेंट्स एज वेल. If you love this session and if you want specifically any particular thing, which me, Prashant Sugan, signing off from YouTube. Thanks a lot and keep watching